Assalamu alaikum. This is science subject of class 9th. हम जो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। पहले हम रिकॉल करेंगे व्हाट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। वो हमने कल समझा था। Newton's second law of motion states that rate of change of linear momentum is directly proportional to the impressed force or external force, and the change in the linear momentum takes place in the direction of the force applied. This is Newton's second law of motion. अगर हम ऐसे इसको हम लिखेंगे, change in momentum divided by time taken. The change in linear momentum divided by time taken, it's called rate of change of linear momentum. It's directly proportional to the applied force. This is the second law. It means here change in momentum is directly proportional to the applied force. More is the applied force, more will be the change in momentum, linear momentum, because these two are directly proportional. But time taken and force applied is inversely proportional. If force applied is more, change in momentum takes place at a faster rate by taking less time. Because time taken and force are inversely proportional. More is the force, less is the time taken by the body to change the momentum of the body. This is the another way. Applying a bigger force changes the linear momentum of a body at a faster rate, taking less time, and vice versa. This is the Newton's second law of motion. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो हमें डेराइव करना है। इसमें हम कुछ अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन है, let m be the mass of the body. This is the small m is the mass of the body. The body is moving along a straight line. Here the body is moving along a straight line with initial velocity u. U is the initial velocity of the body. Which is moving along a straight line. Initially its velocity is u. This is the body. It is mass is m. Suppose F is the force which is constant in magnitude, which is applied on this body. Since its velocity changes, F is the applied force, external force, as per the Newton's first law of motion. If its initial velocity is u, it is in motion, its initial velocity is u. When force is applied on it, its velocity changes. That is v. Suppose v is the final velocity of the body. V is the velocity of the body. That is final velocity of the body. When a force is applied on it for a time t, t is the time for which the force is applied. These are some assumptions which we take here. Now m is the mass of the body, u is its initial velocity, mass of the body remain the same. When F is the force which is applied, when force F is applied on this body, its velocity changes to v. V is the final velocity of the body. Mass remains the same. T is the time for which the force is applied. ठीक, इसका हम अब लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। यहाँ भी इनिशियल मोमेंटम, यहाँ फाइनल मोमेंटम, फिर इसका हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कितना चेंज हुआ इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम, वही इसको हम निकालेंगे। ठीक, इनिशियल मोमेंटम कैसे हम निकालेंगे? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी
कैसे निकालेंगे? दैट इज़ सपोज P1 लिखेंगे हम. P1 is the initial momentum of the body, that is mass of the body, and it is initial velocity. Initial velocity is u. Similarly, final momentum of the body कैसे निकालेंगे? Suppose it is denoted by P2, that is mass of the body, and final velocity is v. Initial velocity u, final velocity v. चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे हैं? चेंज इन मोमेंटम जैसे कि हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ इसी तरह हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज़ फाइनल मोमेंटम इज़ एम वी, इनिशियल इज़ एम यू. एम को हम कॉमन निकालेंगे वी माइनस यू, दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी. डेल्टा पी भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ऐसे ही लिखें. चेंज इन मोमेंटम इज़ एम इंटू वी माइनस यू. अच्छा, इसका अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे. किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यानी जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमें यहाँ निकाला है एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टाइम टेकन इज डिवाइडेड बाई टी. हेयर टी इज द टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड. इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर निकला? दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज़ एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी. अच्छा, बट आपको याद रखना है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन. किसके बराबर हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन. इसका मतलब है m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं. बट v माइनस यू डिवाइड बाई टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, दैट इज e. इसके बदले हम लिखेंगे a, m into a, that is rate of change of linear momentum is equal to m a. ठीक है जी. यहाँ हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. सेकंड ऑफ मोशन हम रिकॉल करेंगे. ये क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, यहाँ हमने निकाला, हम पहले लिखेंगे यहाँ रेट ऑफ चेंज, जो हमने ऊपर निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला हमने, दैट इज इक्वल टू एम ए. एम इज द मास ऑफ द बॉडी, ए इज इट इज एक्सेलरेशन. ये हमने यहाँ से निकाला. ठीक. बट अकॉर्डिंग टू, हम अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिकॉल करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that rate of change of linear momentum is proportional to applied force. Rate of change of linear momentum is proportional to applied force. What is the applied force? That is F, which we have assumed here. But rate of change of linear momentum किसके बराबर निकला? ma. That is ma is proportional to applied force. applied force हमने assume किया है, that is f. that is ऐसे लिख सकते हैं हम, f is proportional to ma. ये हमें आया एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है जो हमने अप्लाई किया था, that is ma. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हम हटाएंगे. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा. दैट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज एम एफ इज इक्वल टू के एम ए, वायर के इज द प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स विच वी अडॉप्ट फॉर मेजरिंग द फोर्स. के का वैल्यू किस में डिपेंड है? इट डिपेंड्स upon the units chosen. ठीक. in SI units जो k का वैल्यू है वो 1 बनता है.
यानी अगर हम मास लेंगे 1 किलोग्राम 1 लेंगे, ठीक। फोर्स जब अगर हम फोर्स अगर हम 1 लेंगे 1 यूनिट, मास हम 1 यूनिट लेंगे, एक्सेलरेशन अगर हम इसको 1 लेंगे, A=1, ये क्या बनेगा, K=1। दैट्स वाई एन SI यूनिट्स K=1। अगर हम K=1 यही इसमें पुट करेंगे, दैट इज़ F=, ये क्या बनेगा, F=ma, F=ma। This is the mathematical formulation of second law of motion. It states that the force acting on a body is the product of mass of the body and it is acceleration. What is the mathematical form of second law of motion? Second law of motion, mathematical form of second law of motion is that the force which acts on a body is the product of the mass of the body and it is acceleration. This is the mathematical formulation of second law of motion.